Good morning, dear students. Today we will learn some more examples of based on ratio and proportion. Now the example number 15. This is the ratio of A and B of the present age is 5:7. Then and the 8 years ago the ratio of their age is 7:13. So find their present age. So in this question what we can do, we can write the present age of A and B are in ratio 5:7. So let present age of A is equal to 5x, B is equal to 7x. According to question, the ratio of their age before 8 year, so we can subtract 8 from both. We get 5x minus 8 upon 7x minus 8 is equal to 7 upon 13. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 13 से कर देंगे, दोनों को इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 13 5 जा 65x, 13 8 जा 104, 7 7 जा 49x, 7 8 जा 56. दोनों को ट्रांसफर कर देंगे बाई ट्रांसपोजिंग. कमांड देते हैं इसको बाई ट्रांसपोजिंग. 65x minus 49x is equal to 56 minus 104 become plus. 65 में से 49 लेस करते हैं तो 16x is equal to 48. Cancel them, get 3. So the percentage of A become 15 years, 7 into 3, and other person B is equal to 21 years. Now the second example number 16. A bag contain 50 paise, 25 paise and 10 paise. There are three type of coins are in ratio 5, ratio 9, ratio 4, and the amounting of them is 206. Find the number of coins of each type. So what we can do, this is the ratio of the counting number. So we can multiply to each ratio by x to get the number of coins of each type. So let यहां पर हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सिंस रेशियो ऑफ कॉइन्स as given below, so let 50 paisa coins, so let number of 50 paise coins is equal to 5x, 25 paise coins is equal to 9x, 10 paise coins is equal to 4x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये उनकी काउंटिंग है, तो इसकी टोटल वैल्यू बिकम 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250x अपॉन 102. रिड्यूस इट इन रुपीज बिकॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज गिवन हियर. प्लस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 225x अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 4 40x upon 100 is equal to 206. जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे. 5 2 जा 5 5 जा 25 4 जा 9 जा. जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 2 जा और 5 जा. सो वी कैन गेट 5x अपॉन 2 प्लस 9x अपॉन 4 प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 206.
its LCM be 20. LCM भी 20, so 2 10 जा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50x, 4 5 जा 45x, 5 4 जा 4 2 जा 8x इक्वल टू 206. इन दोनों को प्लस कर देंगे, वी गेट 103x इज इक्वल टू 206. 103 कैन बी कैंसिल्ड 2 टाइम इज इक्वल टू 2. सो ही इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप कॉइन्स. सो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. हमारे पास रेशियो है, सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 और 10 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. दिस विल बी द आंसर. Now the next question. Now we will learn how to compare the ratios. So there is the example which is greater. We have two ratios and we will to find out which is greater. Question is example number 17, which is greater. Either the 4:5 or 16:25. So what you do, you can write both in the fractional form 4/5 और कोमा लगा लीजिए 16/25. एलसीएम बिकम, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 25. टेक द एलसीएम. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ratio 16. So you can compare 20 and 16, which is greater. 20, since 20 is greater than 16, so 4:5 is greater. In this way we can find which, compare the two ratios. Now if we have more than 2, how can we arrange them in the ascending or descending order? So this will be the last example. This is example number 18. We have the ratio 5:6, 7:10, 13:15, 23:30. Solution we have, we can write them in fraction form. 5/6, 7/10, 13/15, 23/30. Now take the LCM 30 of each. 6 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 10 3 जा 21, 15 2 जा 26, 13 23. We have to arrange them in ascending order. So write the first smaller number first. So 21 ascending order, or you can write required ascending order. Ascending order, 21 is the smaller, so write 7/10 first, then 23/30, then 5/6, then 13/15, or 7:10, 23:30, 5:6, and 13:15. This will be the answer. One question, we have the ratio. This is question number 18. We have the ratio
Question number 18, solution. We have ratio of income to saving is equal to 11:2. So he is asking to find the expenditure actual saving is equal to rupees 2500. So by unity method we can solve it. हमारे पास ये इनकम है, ये सेविंग है. वी कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड. हम इनकम को लेट कर लेंगे और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड द सेविंग, सो वी कैन चेंज इट इनटू एनी ऑर्डर. तो व्हेन वी कैन राइट इट व्हेन सेविंग इज 2, then income is equal to 11. When saving is 1, then income is 11/2. Or when saving is 2500, then income is 11/2 into 2500. उसे कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 13,750 rupees will be the salary. So we can find his expenditure. So his expenditure 13,750 में से हम 2,500 माइनस कर देंगे, तो we get 11,250 will be the answer. Thank you.